ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے. حسنین بہت خوش ہوتے ہیں جب اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. حسنین آپ نے ایک بال اٹھائی اور دوسری ویسے ہی جو میرے حصے کی تھی وہ گرنے والی ہے. لیکن آپ کو بتائیں کہ جب بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو حسنین الگ سے ہی ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے خوشی کی. اور آج ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں ہاں ایگزیکٹلی تو ہمارے ساتھ بہت ایسے لوگ موجود بھی ہیں جن سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے کیونکہ آسٹریلین فٹ بال لیگ AFL ایشیا کپ 6 سے 8 دسمبر ویتنام میں کھیلا جائے گا, جس میں ویمنز اور مینز ٹیم شرکت کریں گے. ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 16 ممالک کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں, جبکہ پاکستان AFL ٹیم کے لیے ملک بھر سے 60 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا, جبکہ ٹریننگ کیمپ کے لیے 24 خواتین کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا تھا جو اب بھارت سے مقابلے کے لیے تیار ہے. حسنین, بھارت سے جب مقابلہ آتا ہے نا تو ویسے ہی تھوڑی سی جو ہے نا خوشی ہو جاتی ہے. انڈیا سے جب بھی مقابلہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیتیں, چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی کی جنگ ہو, چاہے وہ AFL کے مقابلے ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاجرہ شکیل جو کہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کی. حاجرہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ موجود ہے سلمہ حبیب جو کہ قومی پلیئر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق ہے آسٹریلیا سے, جو کہ کوچ بھی ہیں اور ہماری لڑکیوں کو ٹرین کر رہے ہیں. مائیکل گلس. مائیکل, thank you so much for joining us. First of all, we'll start from you. What's about this AFL thing? And it's popular in Australia, but what is the future in Pakistan? Oh, it's very good in Pakistan. They've been playing it here since 2014, and in 2022 the men won the Asian Championships in their first attempt. We've got the Asian Cup in 3 days in Vietnam against 16 other Asian countries, and the men are favourites, and the women over the last 3 days we've been doing a training camp 3 hours a day. They have progressed rapidly and they're in a chance to make the finals as well. Okay, great. حاجرہ, آپ کی طرف آؤں گا. AFL کے حوالے سے بتائیے کہ سب سے پہلے اس گیم کے رولز کیا ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم کسی اور گیم کی بات کرتے ہیں فٹ بال, ہاکی اور کرکٹ کو چھوڑ کے, تو پاکستانی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ گیم اصل میں ہیں کیا. بالکل, لیکن یہ بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس میں ٹیکل بھی ہے, اس میں فٹ بال بھی ہے, اس میں ککنگ بھی ہے اور اس میں کیچ بھی ہے. تو یہ بڑی فن گیم ہے. تو اس میں لڑکیاں آئیں, میں تو چاہتی ہوں. تو اور ٹیلنٹ میں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور اسپیشلی گرلس کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں تو گرلز بھی آنا چاہتی ہیں. بہت ساری گرلز دیکھی ہم نے, ٹرائلز کے دن بھی دیکھی, اور پھر جب ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو ہر گیمز میں وومنس کی بہت فیلڈ ہے, بہت یہ کرتی ہیں. اور پاکستانی وومنس کچھ اچھا کر رہی ہے AFL میں. بالکل بالکل بہت اچھا کر رہی ہے اس بار. تو انشاءاللہ ہم نے بہت لاسٹ جی بالکل 2023 میں تھائی لینڈ میں ایشین کپ ہوا, تو ہم نے تھائی لینڈ کو بیٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ اس بار تو ہم نے کپ لینے جانا ہے, 1-2 میچز نہیں جیتنا انشاءاللہ. سلمہ, آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں, کس طرح سے آپ کے لیے چیلنجنگ ہے اور کس حد تک آپ محنت کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ چیلنجز بہت سارے ہیں, جیسے کہ ہمارا سب سے مین مقصد ہے کہ اسپانسرز ہمیں نہیں مل رہے ہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے اسپانسرز ڈھونڈ رہے. ہمارا آج یا کل ہمارا ٹکٹ تھے, لیکن اسپانسر کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہم لوگوں نے اس دفعہ بہت محنت کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم لوگ 67 ڈے پہ جا رہے ہیں ٹریننگ میں, ابھی ہم لوگوں نے 100 پہ ہم لوگوں نے ٹریننگ کیا ہے, فزیکل ٹریننگ کیا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ کیا ہے. اور ہم لوگ مزید وہاں پہ جا کے ہم لوگ چاہ رہے ہیں وہاں ایشیا کپ کھیل کے آئیں اور کپ اپنا نام کریں. Salma, tells us about sponsorship. It's a very big problem in Pakistan. There is no sponsor. Just you'll found a sponsor in cricket, a bit of sponsor in hockey and football, but you're working in AFL for Pakistan for quite a long time now. So what is this problem? Sponsorship is not coming, or federation is not that much healthy? Federation very healthy, like anything. Sponsorship is difficult. Times are tough in Pakistan. We're very blessed to have Siddharth Tariq, our president, who has funded this program since 2017 by himself. Like an extraordinary man. He's a true hero of AFL in Pakistan. He gets great support from Chaudhry Ali, the General Secretary, and also I'm sponsored 3 years by AFL Vice President, Dr. Shabazz in Melbourne, who sponsors my airfare to come over and do this. I work voluntary. I'm a national coach who volunteers his time. I leave my family, my country. This is my 3rd trip to Pakistan to develop the game, and I do it for the players to give them the opportunity to represent internationally. Is there any grounds and every facilities in Pakistan? How do you analyze that?
Oh, 100%. We play on the cricket grounds. How many cricket grounds in Pakistan? MCG. How many cricket grounds in Pakistan? Millions. Millions, yeah. So there's no problems with grounds in Pakistan. Problem is balls. I have to bring the balls from Australia because the balls, they don't have AFL balls, obviously, in Pakistan. But the determination, the enjoyment, it is a game that is a mixture of kabaddi, rugby, soccer, AFL, basketball, you put it all together. It's so exciting to run, jump, catch, kick, tackle. And the girls, the Pakistani girls are the hardest tacklers in Asia. Oh my goodness, that's good to hear about. अच्छा, हाजरा ये बताएं कि जैसे कि आप कप्तान हैं, कप्तान की भी एक भारी जिम्मेदारी होती है, टीम को लीड करना, टीम को लेकर चलना. आप किस तरह से ट्रेनिंग कराती हैं और किस तरह से आपके लिए ये आसान होता है सबको समझाना, लेकर चलना? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं होता ऑब्वियसली पूरी टीम को लेकर चलना. तो नहीं, सब गर्ल्स बहुत कोऑपरेटेड हैं. अच्छा. बहुत मतलब बात सुनना और जो मतलब सारा कुछ कोचेस मौजूद होते हैं हमारे, सर इरफान, सर नियाजी, सर मतलब सर लतीफ़, सॉरी सर गुलाम जी. तो वो लोग मौजूद होते हैं, वो लोग हमारे साथ ग्राउंड में. बिल्कुल सॉरी. तो सर जुल्फ़िकार जो हमारे सर माइकल जी बिल्कुल कोच माइकल, यस बिल्कुल. नहीं वो मतलब उन्होंने जो पिछले उन्होंने मेहनत की है ना, हम इस लाइन तक पहुँचे हैं, फिर इन्होंने देखा है तो हमें मतलब इस तरफ आए हैं हम. तो फिर इंशाल्लाह अब देखें इंशाल्लाह. अच्छा सलमा, ये बताएं कि कितने घंटों की ये ट्रेनिंग होती है, कब आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होती है? हाँ, हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं गर्मियों में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, लेकिन सर्दियों का मौसम आपको पता है हम लोग करते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक. तो इस टाइम हम लोग इवन मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ. हम लोग समर्स पे हम लोग घर नहीं जा सकते हैं ट्रेनिंग की वजह से. यहाँ पे हम लोग इसी एफएल की वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हैं. और विंटर्स में और इवन यूनिवर्सिटी में हमारे साथ ज़्यादा मुश्किलात होती हैं. स्टडीज़ को आगे साथ चलना, स्पोर्ट्स को भी अहमियत देना. तो ये इस तरह का है ये तमाम तर चीज़. Michael, how you train the girls for Asia Cup and you are up for the challenge? Oh, 100%. I mean, they've been training twice a week with the local coaches since the start of the year. My job is to come in and polish them up and give them the strategies, put them in the right positions, and then give them the game simulation, which we've been doing 2 hours a day since I arrived last Thursday. And then I train the men 3 hours a day, so 5 hours of work with an hour in between for me, as well as media. All these exposures that we have given both the men and the women, not just in AFL, but in opportunities through media, in opportunities through sponsorship. And that's what it's about, growing the game and giving people opportunities to develop themselves. And I couldn't be more prouder than the AFL Pakistan women's team in their determination, their resilience and their courage. The stories that they've been telling me about how they have to, some girls are driving 4 hours each way to come to training. Some girls are on their motorbike. Some girls have given up work. Some girls have put their studies aside to commit to the side. And same with the men as well. We've got people from Swabi, Multan, Gujranwala, Lahore, Karachi, all parts of Pakistan to come together as one team to hopefully bring home the cup for the pride of Pakistan. So how you see the future of this game in Pakistan? Yeah, outstanding. Last time, as I said, this is my 3rd trip. Last time I was here in 2022, we went down to Multan, ran a training camp. We had 1,500 school kids watching and cheering every kid. I've been into, 10 or 15 schools, males and females, across Islamabad, Gujranwala, Lahore, Karachi, Multan. Every time I go into the school, the kids love it, especially the females. I think they just love the opportunity to tackle. Okay. We've had simulation, match simulation. They don't tackle in groups of 1. They don't tackle in groups of 2. We have 3 or 4 of them all jumping on the other players and bringing them to ground. And it's so exciting to watch. Okay. अच्छा हाजरा, जिस तरह के माइकल बता भी रहे हैं कि आप लोगों के लिए जिस तरह से टैकल करते हैं हर चीज़, इसके अलावा भी कोई गेम्स हैं जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन होती है और आप खेलते हैं? कुछ गर्ल्स हैं और कुछ जो सिर्फ फुटी खेलती हैं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल. तो वैसे मैंने टाइक्वांडो सीखा हुआ है, ब्लैक बेल्ट जी. मैं सेकंड ऑन गया एशियन चैंपियनशिप में 2023 में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. तो मैंने वो भी गेम्स खेली हैं. तो बट ये गेम बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसमें स्टैमिना टफ है. तो इसमें
ना ये टोटली डिफरेंट है. जब मैं इसमें आई तो मैंने ज़्यादा इंजॉय किया. मैंने कहा इसमें अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर इसमें है AFL में. तो इंशाल्लाह. अच्छा, कमर्शियल एस्पेक्ट भी है इसमें, क्योंकि क्रिकेट में हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट है. अगर कोई प्लेयर कोई लीग खेलता है उस पर तो पैसों की भरमार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आप स्पॉन्सर्स का जिक्र कर रही थी, कमर्शियल एस्पेक्ट्स का जिक्र कर रही थी, अगर वो मिसिंग होगा तो फिर हमारे प्लेयर्स क्यों इनकरेज होंगे इस तरफ आने पे? बिल्कुल बिल्कुल ये इशू है पाकिस्तान में, ये इशू है. और हमारी गवर्नमेंट को स्पॉन्सर दें, हर गेम को देखा जाए. हर गेम है और टैलेंट भी है, मतलब हर एक का स्टैमिना अलग है, स्टाइल अलग है, गेम्स अलग है, तो हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी अलग है. तो हर चीज़ को देखना चाहिए, ताकि क्रिकेट में है तो फुटबॉल भी होना चाहिए, फुटबॉल है तो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल को भी देखना चाहिए. हर गेम्स को हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ को मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही है. सलमा, आप बताएं कि जिस तरह से आप की कप्तान ने भी बताया कि ये भी बहुत सी मल्टी टैलेंटेड, इसके अलावा आप भी कोई गेम्स खेलती हैं जिसकी या फिर इंटरेस्ट रखती हैं या फिर फ्यूचर में खेलना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ और उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया है नेशनल लेवल पे. उसके साथ मैं नेट बॉल खेलती हूँ, उसमें जीबी की तरफ से मैं खेलती हूँ, जीबी की टीम में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है. फ्रॉम जीबी गिलगित बल्तिस्तान. और उसके साथ लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हो रहे थे तब मैंने भी सिल्वर मेडल लिया था. अभी हैंड बॉल जो प्राइम मिनिस्टर लीग चल रहा था उसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है. मल्टी टैलेंट हूँ मैं इसमें, इस गेम्स में. अच्छा, आप हाजरा ये बताएं कि आपके साथ जो बाकी लड़कियां होती हैं उनके हवाले से मतलब फैमिली सपोर्ट उनको होती है कि ये भी एक बड़ा इशू है क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल ये इशू है. और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम भी यूनिवर्सिटी जाने वाले, और कुछ जॉब्स छोड़ के कुछ घर पे, कुछ जो पेरेंट्स होती हैं फीमेल्स जो, तो फिर मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है हर लड़की के लिए, हर उसके लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता कि घर से बाहर निकल सके. लेकिन वालिदैन को चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, मतलब फीमेल्स को. इससे तो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है. बहुत सी ऐसी लड़कियां जो स्ट्रेस में होती होंगी, उनके लिए खेल को साथ लेकर चलना और ये चीज़ें सोचना कि हम कैसे करें, फिर उनको कैसे टैकल करती हैं आप? उनको टैकल नहीं करती, उनको खुद उन पे इतना जज्बा होता है कि वो इस चीज़ को, उनका पैशन है ना, वो इसलिए घर छोड़ कर तो आप देती होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर Okay, Michael से एक सवाल करना. Yes. Michael, I have one question for you. That is a very interesting question. We have a nation of 24 crore and we only got one gold medal in Olympics. Javelin? So yeah, javelin. And that is Arshad Nadeem, you know. But when we talk about Australia, there is a lot of sports playing in Australia and you guys won a lot of gold medals. And in cricket, you are super duper, I mean to say 5 World Cups, Champions Trophy, T20 World Cup. What is the main difference in Australian sports and Pakistani sports? Easy. Discipline. Discipline. We train hard, we prepare well, we have good coaches, we have good mindset. And sadly, in 7 years of coming to Pakistan, we don't have that. Every time I come, I say training starts at 9 o'clock, the athletes turn up 9:15, 9:30, 9:40, 10 o'clock. And I say next day, Aussie time, so 10 o'clock means they get there at 9:45. So at 10 o'clock we start. Yesterday I had 3 of the males turn up 3 seconds late. Okay, the whole team had 5 laps and 100 push-ups. Next day they were there 20 minutes early. So you've got to impose the discipline. You know, that's the difference. Yeah, if you train harder, you work harder, as well as you have a positive mindset. The other thing across Pakistan that I see, most people don't believe in themselves. This is an unbelievable nation. I've been lucky enough to drive across it 3 times, from way down south in Karachi all the way up to Islamabad, Gujranwala. I've been to Swabi twice and then across to Lahore. And the people just need to believe in themselves. If they believe in themselves, even if you don't have the discipline, you saw your javelin thrower. He was practicing with sticks. He didn't even have a javelin, and yet he wins the gold medal. If that's not inspiration for everyone... Believe in yourself and discipline. 100%. Exactly. And these girls, they've been fantastic. My girls' team, they've been disciplined. They've been working hard. We've been running. You ask them how hard I've been training them. Some of them have been in tears. Some of them have been throwing up. But if you want to win that Asian Cup against 16 other nations, you've got to be better, don't you? Yeah, exactly. You've got to have the positive mindset. You've got to have the discipline. And you got to work hard. Michael, thank you so much for coming, and it's pleasure to talking with you. हाजरा आपका बहुत शुक्रिया, सलमा आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much for coming. शुक्रिया जी. ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा सेगमेंट AFL के हवाले से. उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जाएगी और ये मुकाबला जीतेगी, और जिस तरह माइकल की उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पे भी पूरा उतरेगी और पाकिस्तान की उम्मीदों पे भी पूरा उतरेगी. यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस.